Well, the mood at the Eid home and orphanage in Pakistan's Karachi is mixed ahead of Eid as the economic crisis has resulted in fewer people making charity donations for the festival. A report. As Eid al-Fitr approaches, the mood in Eid home and orphanage in Karachi is mixed. The economic crisis in Pakistan has resulted in fewer people being able to afford charity donations for the festival, usually a time of generosity. So orphans are taking matters into their own hands and making their own new clothes instead. Sabah Idi, the in charge of the network of orphanages, is also helping to embroider the clothes. She said she had to dip into savings to cover the cost of the Eid gifts, unlike previous years. इस दफ़ा बच्चों के ना अनस्टिच कपड़े हैं ना रेडीमेड कपड़े हैं और सारी चीज़ें हमने जो फंड हमारा आता है इसकी वजह से हमने सारा ये ना इसमें से ही हमने ख़रीदा बच्चों के लिए रेडीमेड और अनस्टिच कपड़े। इसमें ज्वेलरी है, चूड़ियाँ हैं, शूज़ वगैरह हैं और सारी जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी हमने अपने फंड से हमने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। The Eid Foundation provides homes to more than 8,000 children across Pakistan. The 30 residents of the orphanage in Karachi are glad to get new shoes and clothes despite the rising cost of living. पिछले साल भी भाभी ने हमें सूट दिया था, मंगवा के भी दिया था और कच्चा पीस भी दिया था, हमने खुद भी बनाया था और इस साल बाहर से भी नहीं आया तो भाभी ने हमें खुद खरीद के दिया है, हम बना रहे, सी के पहन रहे। अच्छा है। Pakistan is experiencing its worst ever inflation, which rose to 35% in March, following a depreciating rupee currency and a rollback in subsidies and higher tariffs. Sabah fears they will have to face more challenges after Eid.